Hello everyone, taking our lesson further, today we'll be starting with the next topic, that is why power sharing is desirable. Under this topic, we'll be studying the relevance of power sharing. There are many reasons for considering power sharing as a relevant option, and here we'll be discussing about prudential reasons and moral reasons for defining the importance of power sharing. First of all, we'll be discussing about prudential reasons. Now, what are prudential reasons? These are the reasons which have been identified after proper calculation. मतलब proper losses या gains देखने के बाद जो हमने reasons identify किए हैं behind the importance of power sharing, these reasons are included under prudential reasons. We'll be studying the first prudential reason, that is power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between the social groups. That means power sharing is always a good option. Why? Because it gives equality to the citizens of the country, and this is the reason that there are no conflicts among the different communities in a country. Then power sharing is a good way to ensure the stability of political order. इसका मतलब है कि अगर लोगों को इक्वालिटी मिलेगी, प्रॉपर राइट्स मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, देन दैट कंट्री विल बी इन अ बेटर सिचुएशन, और वहाँ की जो पॉलिटिकल ऑर्डर होगा वो भी प्रॉपरली फंक्शन करेगा और वहाँ पर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ सारी फंक्शनिंग होगी. सो देयर विल बी प्रॉपर पॉलिटिकल ऑर्डर इन दोज कंट्रीज वेयर देयर इज अ मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग अडॉप्टेड बाय इट्स citizens. Now, the next reason is imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation. इसका मतलब है कि अगर कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी है, सपोजिंगली हम श्रीलंका की एग्जांपल लेते हैं. इन श्रीलंका वी हैड स्टडीड दैट सिन्हाला स्पीकर्स वर इन मेजॉरिटी वाइल तमिल स्पीकर्स वर इन माइनॉरिटी. और उस कंट्री में क्या हुआ था? द मेजॉरिटी कम्युनिटी केप्ट ऑन पुटिंग प्रेशर एंड देयर डोमिनेंस ओवर द माइनॉरिटी कम्युनिटी. थोड़ी देर तक तो देर वॉज द पीपल वर द तमिल स्पीकर्स वर they were considering the policies which were made by the Sinhala leaders, but later on they refused to take orders from the Sinhala leaders, and this was the reason that there were conflicts among the communities of Sri Lanka. So अगर majority community अपनी डोमिनेंस शो कर रही है तो इन द शॉर्ट रन इट मे बी एन अट्रैक्टिव ऑप्शन, बट इन द लॉन्ग रन इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द नेशन. अंडरमाइंस मीन्स दैट इट विल रिड्यूस द यूनिटी ऑफ द नेशन. जिस कंट्री में डोमिनेंस होगी एक कम्युनिटी की और डिस्क्रिमिनेशन होगी दूसरी कम्युनिटी के साथ, वहाँ पर यूनिटी नहीं होगी अमंग द कम्युनिटीज़. देन tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings ruin to the majority as well. That means अगर कोई majority community है, let's say सिन्हाला speakers की बात करें तो सिन्हालाज ने unfair policies adopt की, and this was the reason that Tamil speakers felt discriminated, alienated. और इससे क्या हुआ? उन्होंने अपनी ऑपरेशन दिखाया, अपनी डोमिनेंस दिखाई माइनॉरिटी कम्युनिटी पर, और इसके कारण उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, जिसके कारण सिर्फ श्रीलंकन तमिल्स ही नहीं, सिन्हाला स्पीकर्स की भी लाइफ्स में बहुत चेंज आया, बिकॉज देयर वाज अ सिविल वॉर बिटवीन द टू कम्युनिटीज़, एंड फ्रॉम बोथ द कम्युनिटीज़ देयर वर डेथ्स ऑफ thousands of people. Further, we'll be discussing the moral reasons. The first one is power sharing is the very spirit of democracy. Let's consider the concept of democracy first. The concept of democracy is a system of government of the people, by the people, and for the people, which emphasis on distribution of power among people.
So this is the reason that power sharing is the very spirit of democracy. Now, people have the right to be consulted on how to be governed. That means, under the model of power sharing, people have the right to choose that form of government which can rule upon them. Then, a legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. Now, what is legitimate government? Legitimate government means a legal government. इसका मतलब है एक लीगल गवर्नमेंट वही है जो कैसे फॉर्म हुई हो, जो उनके सिटीजन्स, उस कंट्री के सिटीजन्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्शंस वेयर द सिटीजन्स कैन वोट for their government. That government is a legally formed government, and all these things can be possible if the power sharing model is adopted in a country. So all these points makes the model of power sharing a desirable option for the country.